Students, today we discuss resonance and resonating effect, a very important and difficult chapter relating basic concepts of organic chemistry. So please concentrate and listen carefully. First we start the meaning of resonance. What is the meaning of resonance? Resonance is a phenomenon in which a molecule can exist in different arrangement or structures by redistributing its electrons. Any molecule can attain different structures by redistributing its electrons. Molecule atoms जमती सेमती थिबो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक निज निज भितर अरेंजमेंट चेंज करिकी डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप करि परिबे सेम मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज रेजोनेंस. I will explain you the concept of resonance with help of carbon dioxide. Remember first year chemical bonding video को मने पकाओ. The structure of carbon dioxide is given like this. Carbon, all its 4 electrons are used to form 4 covalent bonds. This oxygen outermost orbit has 6 electrons. 2 are used in these forming these 2 covalent bonds. This oxygen also possesses 6 electrons in its outermost orbits. Then 2 are used in forming these 2 covalent bonds. This is the structure of CO2 as already explained in bonding video. Now what happens, look at. This process takes place. These bonded electrons travel to oxygen atom, moves to oxygen atom. At the same time, this lone pair of electrons of oxygen atom comes to this position. So what happens, look at. This bond रे थिबा both electron oxygen atom ऊपर को move कला. So oxygen atom has 6 electrons now. अगर 4 थिला, these 2 electrons move करिया पर it becomes 6 electrons. Here what happens? This lone pair is shifting to here. So here what a bond theory हला, double bond थिला, triple bond हला, and this oxygen रो 4 electrons थिला. Now 2 electrons रहला because one pair of electron is shifted to here and formed triple bond. Now what is the charge development or how is the charge development taking place here? Look at. These 2 electrons oxygen atom ऊपर को जतबे move कला, oxygen atom रो गोटे electron gain हला. Why? Because this bond pair रे these 2 electron भितरे oxygen रो 1 electron थिला, carbon रो 1 electron थिला. So both जेतबे oxygen atom ऊपर को move कला, oxygen atom रो 1 gain हबो. निजे गोटे देई थिला, ना दुईटा जगह ता ऊपर को आसिला, ताले gain कोन हला? 1 electron gain हला. So ता ऊपरे 1 negative charge create हला. Similarly, this pair of electron आसिकी जेतबे एठी गोटे extra covalent bond form कला. So oxygen रो दुईटा जाक इलेक्ट्रॉन आसिकी बॉन्ड फॉर्म कला, तो ऑक्सीजन रो निजर गोटी हेकरी रहिला, लॉस गोटी इलेक्ट्रॉन हला. So when this pair of electrons moves to form a bond, then the oxygen atom lose 1 electron only. So here a positive charge is developed. Similarly, this carbon dioxide can also make another type of redistribution. एटा गोटे प्रकार redistribution देखिली. This bond pair टा this oxygen atom को आसिला, this oxygen lone pair टा ऊपर को आसिला. Now another type of distribution हे परिबो. This lone pair टा आसी के गोटे extra covalent bond को form करिवो. This bond pair टा this oxygen ऊपर को आसी जिवो. सेठी redistribution टा ए पट हेतिला, एठी redistribution टा ए पट हे परिबो. So कौन सिचुएशन डेवलप हबो? दिस लोन पेयर एठी के आसी माने एठी जो डबल बॉन्ड थिला ट्रिपल बॉन्ड हला, एंड एठी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थिला 2 एठी के आसी गेला माने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एठी रहिला, बैलेंस रहिला. So similarly this bond pair of electrons this oxygen ऊपर आसी गेला माने
एठी सिंगल बॉन्ड हम आउ एठी आगु 4 इलेक्ट्रॉन्स थिला गोटे आसीगला माने हियर इट बिकम्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. Now consider how the charge is developed. The charge developed is, look at this oxygen atom lose one pair of electrons. If this oxygen atom lose one pair of electrons but forms a bond here, এই बॉन्ड भितर जो दुईटा इलेक्ट्रॉन रहिला गोटे ऑक्सीजन रो गोटे कार्बन रो भली ट्रीट करा जाए ना नहीं. सो दिस ऑक्सीजन एटम दुईटा इलेक्ट्रॉन देला सत बट गोटे ऊपर निजर ऑक्युपेंसी रहिला. सो दिस ऑक्सीजन एटम लूज वन इलेक्ट्रॉन, सो इट गेट इन मोनो पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली दिस बॉन्ड पेयर जो ऑक्सीजन ऊपर को चली गला तो दिस ऑक्सीजन दुईटा इलेक्ट्रॉन पाइला सत बट दिस दुईटा इलेक्ट्रॉन भितर तार निजर गोटे इलेक्ट्रॉन थिला बिकॉज दिस बॉन्ड रे ऑक्सीजन रो गोटे इलेक्ट्रॉन और कार्बन रो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि. सो दिस बॉन्ड पेयरटा ऑक्सीजन एटम ऊपर को शिफ्ट हैला माने दिस ऑक्सीजन रो वन इलेक्ट्रॉन गेन हैला, टू गेन हैला नहीं. 2 इलेक्ट्रॉन्स आसिला सत जो दुईटा इलेक्ट्रॉन ता ऊपर को आसुची से भीतर निजर गोटे इलेक्ट्रॉन थिला. सो वन इलेक्ट्रॉन गेन हैला एंड सो इट बिकम्स ए मोनो नेगेटिव चार्ज. सो CO2 मॉलिक्यूल रे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट पाई परिबा, also this type of arrangement पाई परिबा. So CO2 can exist in 3 different structures by redistribution of electrons. देखो CO2 रो एटम सब जोटी सेठी अछंती सेंटर रे C बोथ साइड रे O, सेंटर रे C बोथ साइड रे O, सेंटर रे C बोथ साइड रे O, एटम सब जोटी सेठी अछंती बट electron redistribution takes place and attain different structures. This phenomenon is called resonance. Okay, this resonance can take place in many compounds. गोटे गोटे कंपाउंड रे केमिति रेजोनेंस होछि आमे पढ़ी पढ़ी कि जिबा डिस्कस करि करि जिबा तार इफेक्ट भी कोन डिस्कशन करि करि जिबा. सो फर्स्ट आमे डेफिनेशन जानिले रेजोनेंस इज द फेनोमेनन इन व्हिच a molecule can possess different arrangement or different structure by redistributing its electrons. This process is the resonance, and these different arrangement or structures jaha hame paiba those are called resonating structures or canonical structures. Okay, the different arrangements obtained during the process of resonance is called resonating structures or canonical structures. Now interesting thing is कार्बन डाइऑक्साइड रो जहाँ सब प्रॉपर्टी आमे लैबोरेटरी रू पाउछु no structure can explain all the properties. This structure cannot explain all the properties we got in laboratory. This structure cannot explain all the properties. No structure can explain all the properties of CO2. So conclusion कौन है? Actually CO2 केमिति रहुछि? It is an imaginary structure. We cannot draw it in pen and paper. And we say it is the resonance hybrid of all resonating structures. यही सब resonating structures रा resonating hybrid होछि तार true structure टा जहाँ को हमें पेन और पेपर भितर लिखि परिबा नाही. So what is the conclusion from resonance? Resonance रे molecule can exist in different structures. They are called resonating structures or canonical structures. Now no structure can explain all properties of the molecule. ताले molecule टा really केमिति exist करूछि? neither this nor this nor this एई तीनोटी जाक फॉर्म रो कौनसी भी फॉर्म रे CO2 मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करूनी कहीं ना कौनसी भी फॉर्म टा CO2 रो ऑल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करि पारु नाहंती. दिस फॉर्म टा को प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूची, दिस फॉर्म टा को प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूची. जेहेतु कौनसी भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर सब तक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करि पारु नाहंती. सो हमें कोन कहबा रियली कार्बन डाइऑक्साइड ए मानक मध्यरु कौनसी भी फॉर्म रे रहुनी.
ताले रियली जो स्ट्रक्चर बा जो फॉर्म रे रहुची ताको आमे पेन एंड पेपर रे ड्रॉ करि परिबाने ताको आमे कोन कहू केमिस्ट्री लैंग्वेज रे रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिकली एक्चुअली जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स and that resonance hybrid is the most stable among all resonating structures जो resonance hybrid को imagine करो बोले मैं कहूँ जोटा practically pen and paper रे हमें लिखी परिवानी जो form रे CO2 actually exist करे that is called resonance hybrid and it is the most stable among all the structures ए सब स्ट्रक्चर ठू रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर टा स्टेबल रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर टा केमिति ना रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर टा केमिति आमे पेन एंड पेपर एक्सप्लेन करि परिबानी इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर which is called resonance hybrid of these resonating structures CO2 practically केमिति exist करे ना resonance hybrid form रे exist करे जो resonance hybrid form टा को हमें pen and paper draw करि परिबानी practical structure टा को हमें कहू resonance hybrid of all these structures okay now this resonance takes place in conjugate system. Another very important word to understand, resonance takes place in conjugate system means alternative single bond and multiple bond thibo single bond triple bond single bond double bond alternative single bond double bond single bond triple bond alternative hegi thibo carbon chain bhitre that is called a conjugated system and resonance process can takes place in that conjugate system. For example, I am explaining you another example of acetic acid. Acetic acid. All of you know about acetic acid. Acetic acid is CH3COOH, C, double bond O, single bond O, single bond H, 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 H. CH3COOH. This is the formula for acetic acid. Now, in this formula of acetic acid, what happens? Look at here. This oxygen contain 2 lone pair. This oxygen contain 2 lone pair. Now, what happens? This oxygen can donate this lone pair to this bond, but this place. And this bond can move on to the oxygen atom just like takes place here. एटी जेमी देला एटी जेमी हला दिस ऑक्सीजन रो लोन पेयर आसिक एटी गोटे बॉन्ड फॉर्म कर परिबो एटी गोटे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ऊपर जाई परिबो. सो व्हाट इज द सिचुएशन डेवलपिंग? द सिचुएशन डेवलपिंग इज C H H H. Now C. So if this bond pair is moving on oxygen atom, it becomes a single bond. Here is O. Now how many electrons present in this oxygen after displacement, after distribution? 6 electrons are coming in this oxygen atom. And here this pair, lone pair of electrons coming here means here a double bond is coming. And here this is an O containing 2 electrons, single bond is H. Okay, so look at, if this bond pair moves to this oxygen atom and this lone pair moves here, then the situation is obtained like this. एठी double bond एठी single bond है जिबा, एठी single bond एठी double bond है जिबा. Now charge distribution कथा कौन हबो? Now this bond pair moves to this oxygen atom means this oxygen atom रो how many electron gain हला? एई जो दुईटा ऑक्सीजन एटम को मूव करूची सेई दुईटा भितरे ऑक्सीजन रो गुटी इलेक्ट्रॉन थिला
जेहेतु ऑक्सीजन रो निजर गोटे थिला जो दुईटा जाक मूव कला माने दिस ऑक्सीजन एटम रो वन इलेक्ट्रॉन गेन हला सो दिस ऑक्सीजन एटम उपरे मोनो नेगेटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हबो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि एठी की मूव कला हियर डबल बॉन्ड क्रिएट हला एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्ड जो क्रिएट हला से कोवैलेंट बॉन्ड भितरे गोटे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रो बोली हमें कहू आ गोटे इलेक्ट्रॉन कार्बन रो बोली कहू सो दिस ऑक्सीजन एटम आल्सो लूज वन इलेक्ट्रॉन ओनली बिकॉज दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एठी की जते आसिला निज पाखरे गोटे रहिला गोटे ही कार्बन रो भली ट्रीट हबो सो दिस ऑक्सीजन एटम लूज वन इलेक्ट्रॉन सो दिस ऑक्सीजन एटम ऊपर डेवलप हबो single positive charge. Okay, so these are the canonical structures of acetic acid. Remember students, the canonical structures or resonating structures are represented by double arrows, both side arrow symbols, double headed arrow marks. Okay, so these are the resonating structures of acetic acid. Similarly, we can draw the resonating structures of benzene. Look at what is benzene. Benzene is C6H6. Now, carbon, carbon, carbon. Okay, carbon, 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 carbon. Okay, so every carbon is attached with an hydrogen. Now to complete octet, here must be a double bond, here must be a double bond, here must be a double bond. This is the structure of benzene. This is the benzene ring. Alternative double bond, single bonds are present and every carbon is attached with an hydrogen atom. Now look at this bond pair of electrons can shift here. This bond pair can shift here. This bond pair can shift here. So how we will get the structure? Carbon, hydrogen. Here will be single bond. Here will be double bond. Carbon, carbon. Here will be double bond. This bond is shifted to here. So this double bond becomes single bond. This single bond becomes double bond. Carbon. Again this double bond becomes a single bond. Carbon. This becomes double bond, okay, carbon, and this becomes single bond carbon. This double bond becomes single bond carbon, and every carbon contains one hydrogen atom. So these are the two resonating structures of benzene. तीनटा जाक डबल बॉन्ड redistribute ହେଇଛି double bond of position jaga distribute ହେଇଛି ତେଣୁ these are called resonating structures of benzene. So benzene ର double bond ଟା ଏମିତି move କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ଆମେ benzene को graphically କେମିତି show କରୁଛୁ this represents benzene because a double bond ଟା ଏମିତି move କରୁଛି so this represents benzene. So listen students, this is about resonance. तो एमिति का रिजोनेंस लॉट ऑफ कंपाउंड्स रे होची आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आगो को पढ़ी पढ़ी जावा एवरी चैप्टर रे वी विल कम अक्रॉस रिजोनेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट. नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट. Now we discuss characters of resonance and resonating structures. First is the resonating structures or canonical structures have identical arrangement of atoms. Atoms arrangement are identical. Look at carbon dioxide or 3 canonical structure. Atom arrangement are identical. Only difference is in electron arrangement or electron distribution. So in canonical structures, atom arrangement are identical. The distribution of electron are different, but arrangement of atoms are identical. The second one is
all canonical structures possess same number of paired and unpaired electron. माने this canonical structure रे paired electron जेतटा unpaired electron जेतटा every canonical structure रे paired electron and unpaired electron number same रहे. So atoms arrangement same रहे. Unpaired number of electron, paired number of electrons remain same. Only electron distribution takes place. The third point is the energy of the canonical structures are nearly equal. All canonical structures possess nearly equal energy and they are interconvertible. This converts to this also can converts to this can converts to this, that can converts to this. So any type of distribution takes place and one converts to another. They are interconvertible. Another important thing is during resonance, delocalization of pi electrons only takes place. During resonance, जो distribution बा movement हुए, only pi electrons ही movement हुए. So in resonance mainly delocalization of pi electrons takes place. Sigma electrons are not delocalized. Sigma electrons does not move to any atom. They are not delocalized. Only pi electrons are delocalized. Another very important thing is canonical structures having charge separation are less stable as compared to the structure without charge separation. This is very important. Look at कौन कहूँ जो canonical structure रे charge separation present, it is less stable as compared to the canonical structure where there is no charge separation. Means look at CO2 ro this structure रे there is no charge separation because every atom neutral achi, there is no charge separation. But this structure रे this oxygen upre negative charge, this oxygen upre positive charge achi. Molecule ta in whole neutral hela, ethi bhi molecule neutral, ethi bhi molecule neutral. But here there is no charge on any atom, but here there is charge on oxygen atom and of this oxygen atom. So we say here there is charge separation. Molecule neutral sato, but molecule भितर negative charge और positive charge separate है. Here molecule भितर atom जुगुड़ा को जो अच्छी no charge neutral. बुझले पारलो ना पिला माने? Look at to the example. In this structure of CO2, molecule is neutral. All atoms are neutral. In this structure of CO2, molecule is neutral, but atoms are not neutral. This oxygen atom is negative charge, this oxygen atom is positive charge. So we say there is charge separation in this structure, but there is no charge separation in this structure. So what happens? This can take place in other compounds also. We should remember the canonical structure where there is no charge separation is more stable as compared to the canonical structure where there is charge separation. Now pause the video and write the note. Out of the resonating structures, the resonating structure which possesses more number of bonds is more stable. Okay, very important thing. जो resonating structure number of bonds more thibo, that is more stable. For example, look at an organic compound 1,3-butadiene. So but means 4 carbon atom लिखिबा. 1,3-diene means 1 रे double bond, 3 रे double bond. Here there is single bond.
Now बाकी हाइड्रोजन लगेबा. Here carbon 2 bond, carbon need 4 bond, so here H2. Here carbon is associated with 3 bond, it need another bond, so only one hydrogen. Here again carbon is associated with 3 bond, so one hydrogen. Here carbon is associated with 2 bond, so 2 hydrogen. So this is the structure of 1,3-butadiene. Clearly this is a conjugate system. So resonance takes place. What happens in resonance? This bond pair shifts to this carbon atom. If this bond pair shifts to this carbon atom, what happens? H2C, this becomes a single bond. And this carbon ro 1 electron gain haba. Although 2 electrons carbon upar move kala, but these 2 electrons vitare carbon ro nijar gote electron thila, so carbon ro only 1 electron gain haba, so carbon upare mono negative charge haba. Single bond eti rahila C H, eti single bond C H. Now look at emiti jodi lekhiba, this carbon ro 4 bond associated honi. This carbon is not associated with 4 bonds. So it is associated with 3 bonds. So what happens? This double bond or bond pair ta shift heiki this place ku shift habo. Okay. So this place re we will get a double bond. And this place re we will get a single bond. CH2. Look at, in this conjugate system, this bond pair carbon upar shift haba, this bond pair carbon upar shift hele, this carbon ro tetra covalency maintain kariya pai, this bond pair eithiki shift heikiri double bond haba. Then only this carbon ro tetra covalency condition fulfill hei parla. Now this bond pair, if this place को shift होची कौन हबो, this carbon रो 1 electron loss हबो, this carbon रो किछि loss हबोनी, कारण एठी से गोटे देइथिला, this carbon गोटे देइथिला, दुईटा जगह जतले एठी के आसी गले, this carbon जो गोटे देइथिला निजे पाइला, तो बाकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रे डबल बॉन्ड फॉर्म होला, तो ये एक्स्ट्रा पाइला बेले आर गोटे लॉस हो जाइछि, तेणु आ ऊपर किछि चार्ज डेवलप हलानी. मन देई सुनो, एठू जतबेले बॉन्ड पेयरटा आ पाखक आसिला सेतबेले दिस कार्बन रो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हला बेले होची, दिस कार्बन रो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हला बेले ता पूर्वरु दिस कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देछि, सो दिस कार्बन ऊपर किछि भी चार्ज डेवलप होबनी, दिस कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हला बिकॉज़ दिस कार्बन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस बॉन्ड पेयर टा एठी मूव कला बेले दिस बॉन्ड पेयर भी एठी मूव हे गला, सो दिस कार्बन रो एठी गोटे लॉस हेतिला, एठी गोटे गेन हे गला, दिस कार्बन ऊपर किछि भी चार्ज डेवलप होबनी, दिस कार्बन ऊपर भी किछि भी चार्ज डेवलप होबनी, कारण ए बॉन्ड पेयर टा जले एठी एठी के आसीला, एथरे भी तारा गोटे थिला, एई पटे भी जतले डबल बॉन्ड फॉर्म हला, दिस कार्बन रो गोटे इलेक्ट्रॉन रहला, सो दिस कार्बन ऊपर भी किछि चार्ज डेवलप होबनी, बट दिस कार्बन रो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हे कि दिस कार्बन ऊपर मोनो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होबो. माइंड लगे शुणा पड़ो पिला माने बारंबार रिपीटेडली देखा पड़ो वीडियोटा ताहले जाइए बुझा पड़ो. सो ड्यू टू रिजोनेंस दिस स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस. सो 1,3-butadiene रो 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाइली. एज ए मॉलिक्यूल दिस इज न्यूट्रल, दिस इज आल्सो न्यूट्रल इन होल ए मॉलिक्यूल. नाउ लुक एट, in first case number of covalent bonds is more than second case, so first case is more stable than second case. Out of the resonating structures, the resonating structure which contain more number of covalent bonds is more stable. Then another important character is, if a compound possesses more number of canonical or resonating structures, then it is more stable. We can say stability directly proportional to number of resonating structures.
number of resonating structures. Look at आमे जते बेले नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करिबा एमिति किछि कंपाउंड अछि जार दुईटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हबो एमिति किछि कंपाउंड अछि तीनटा हबो एमिति भी किछि कंपाउंड आमे ड्रा करिबा हम सिलेबस सेकंड ईयर सिलेबस रे अछि इट विल पोजेस 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो कंक्लूजन इज जहार जेते नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर से कंपाउंड रो स्टेबिलिटी सेते मोर. फॉर एग्जांपल ए गोटे कंपाउंड बी गोटे कंपाउंड ए रो दुईटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल बी रो चारटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल. So B is more stable than A. This example will come in second year syllabus. Remember here the compound possess more number of resonating structures is more stable. Now pause the video and write the note. Now we enter into resonating effect. These are the fundamentals of resonance. बाकी आर हायर स्टडीज आमर जेई नीट वीडियो रे पाइबो. +2 वीडियो दिस इज +2 वीडियो रे रिजोनेंस एतिकी सफिशिएंट. देन वी विल गो टू रिजोनेटिंग इफेक्ट. लुक एट हियर व्हाट हैपेंस ड्यू टू रिजोनेंस. पोलैरिटी डेवलप्स. रिजोनेंस इज व्हाट. रिजोनेंस इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज़ माने पका हम कहिछि in resonance only pi electrons are shifted, pi electrons are delocalized, sigma electrons are never delocalized. So resonating effect को हमें कौन कहिबा. development of polarity in a compound. development of polarity in a compound due to delocalization of pi electrons is resonating effect. Resonance कौन. Resonance होछि the process in which a compound can possess more than one arrangement due to electronic distribution. Electron distribution हेबा द्वारा गोटे particular compound more than one arrangement possess करूछि, that is resonance. Resonance process जोगु जो polarity develop होछि ता जोगु जहाँ जहाँ effect सब develop हबो those comes under resonating effect. So we can define resonating effect, the creation of polarity in a molecule by the transfer of a pi electron in a conjugated system due to the phenomenon of resonance is called resonating effect. Resonating effect broadly two types, minus R effect, plus R effect. Now what is minus R effect? What is plus R effect? If a group withdraw pi bond electrons from a conjugated system due to phenomenon of resonance, then the effect is called minus R effect. Remember, withdraw pi bond electrons develop minus R effect. माने any गोटे group conjugated system रू bond pair of electrons निज आड़ को टाणी आनिबो. केमिस्ट्री ताको कहा जाउची withdrawing electrons from conjugate system. सेही थ्रू जो जो effect सब develop हबो that is called minus R effect. So if a group withdraw pi bond electrons from a conjugate system due to resonance, then the effect developed is called minus R effect. Remember, गोटे ग्रुप जदि conjugated system रू इलेक्ट्रॉन withdraw कला निज आड़ को जो effect develop हबो that is minus R effect. Similarly, what is plus R effect? Now, if a group donate pi bond electrons to a conjugated system due to resonance, then the effect developed is called plus R effect. Plus R effect माने गोटे ग्रुप जदि pair of electrons donate करिबो, pair of pi bond electrons donate करिबो to the conjugate system, then जो effect develop हबो that is called plus R effect. Simply, if a group donate pi bond electrons to a conjugate system due to resonance, then the effect developed is called plus R effect. Similarly, हमें मन रखिबा electron withdrawing from conjugate system, the effect developed is called minus R effect.
electron donating to conjugate system, the effect developed is called plus R effect. को इलेक्ट्रॉन टा विथड्रॉ करिवो बा डोनेट करिवो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टा विथड्रॉ करिवो बा डोनेट करिवो सो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जदि विथड्रॉ करिवो जो इफेक्ट टा डेवलप हो दैट इज माइनस आर इफेक्ट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जदि कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट हला जो इफेक्ट टा डेवलप हो दैट इज प्लस आर इफेक्ट. नाउ वी हैव टू रिमेंबर व्हिच ग्रुप possess minus r effect and which group possess plus r effect. Look at NO2 group, C double bond O group, COOH group, CN group. These are the groups which possess minus R effect or which develops minus R effect. Means withdraw electron from conjugate system. So to explain minus R, let us take an example of benzoic acid C6H5 COOH benzoic acid. benzoic acid रो रिंग स्ट्रक्चर जदि ड्रा करिवि ताले हम जानिछि बेंजीन रो रिंग स्ट्रक्चर होछि C6H6 जोथरे कि एवरी कार्बन रे गोटी गोटी हाइड्रोजन अटैच अछंती ना एठी गोटे हाइड्रोजन आउट हेकरी ता जगह रे COOH लागिछि. So this is the structure of benzoic acid C6H5COOH which is benzoic acid. Okay, so benzoic acid रो स्ट्रक्चर बुझाय पे बेंजीन रो स्ट्रक्चर टा को माने पकाओ. बेंजीन रो स्ट्रक्चर एतिकी थिला जोथिरे कि एतिकी थिला बेंजीन रो स्ट्रक्चर जोथिरे कि एवरी कॉर्नर रे वन वन कार्बन अछंती आ एवरी कार्बन को गोटी गोटी हाइड्रोजन लागिचंती आ डबल बॉन्ड सब अल्टरनेटिव अछि. Now benzoic acid C6H5CH माने दिस कार्बन रो हाइड्रोजन टा रिमूव करिके ता जगह रे COOH लगाइछि. सो फार्मूला बिकम C6H5COH and this is the structure of benzoic acid. Now COOH group is a electron withdrawing group. So माने conjugate system रो electron बाहर करिवे withdraw करिवे. This is the conjugate system. Benzene ring is the conjugate system. Double bond single bond are available alternatively. So what happens? COOH कौन करिवो this bond pair भितरे. This is the pi bond. This pi bond भितरे थिबा bond pair of electron को से निज ऊपर को attract करिवो. And this bond pair pi bond रो electron दिटा oxygen atom ऊपर को shift हबो और delocalize हबो. Okay, so look at this bond pair this place को shift होची and this bond pair oxygen ऊपर को shift होची. So जो structure टा मिलिबो how will it look at here double bond जेमति रहबा कथा रहिछि here double bond जेमति रहबा कथा रहिछि. This pi bond टा एठी जदि शिफ्ट हला here double bond हे जिवो एटा C हला here OH जेमति रहबा कथा रहिछि. Here this जदि O atom ऊपर को आसिला this will be single bond this will be O and this oxygen ro one electron gain hela. So this oxygen becomes minus charge and kahar one electron loss heichi this carbon ro one electron loss heichi. Look at this bond pair jetale shift heikri ethi double bond kala this carbon ro no loss or no gain of electron because this pi bond रे तार गोटे इलेक्ट्रॉन थिला pi bond टा एठी जेतेबे शिफ्ट हे गला तो दिस कार्बन रो सेमति गोटे इलेक्ट्रॉन रहला केवल दिस कार्बन रो इलेक्ट्रॉन लॉस हला. सो दिस कार्बन ऊपरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हबो. Again what happens this covalent bond can displace to this position. Okay, this is first resonating structure जो थे कि COOH group is minus R group. It withdraw the electrons from the conjugate system and this is obtained. So here again what happens this will shift to this. So again what happens this part जेमिति रहबा कथा रहिला एथिरे किछि डिस्प्लेसमेंट होउनी
so this part as it is rahila. Now this double bond ta a pakku shift habo, so it is jemiti double bond rahba katha rahichi, this double bond ta a pakku shift hele this जो पॉजिटिव चार्ज थिला तार गोटे इलेक्ट्रॉन गेन हे जिवो, न्यूट्रल हे जिवो, एंड दिस कार्बन रो वन इलेक्ट्रॉन लॉस हबो, सो पॉजिटिव चार्ज टा आ पाखु आसी जिवो. These are the resonating effect due to resonance. बेंजोइक एसिड एमिति भी रही पारे, एमिति भी रही पारे, एमिति भी रही पारे. माने बेंजोइक एसिड रो जेते सब एक्सपेरिमेंटल बा प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज हमें पाउछे से गुडा को किछि प्रॉपर्टीज दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिवो, किछि प्रॉपर्टीज दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिवो, किछि प्रॉपर्टीज दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिवो. So these are the electron withdrawing group developing minus R effect. And we have to remember a माने minus R effect देखांती. समिति को माने plus R effect देखांती, all halogens देखांती represented by X. OH group देखाए, that is the functional group of alcohol. NH2 group देखाए, that is the functional group of amine. These donate electron to the conjugate system, so we say these exhibit plus resonating effect. Come to an example. So for plus resonating effect, let us discuss the example of C6H5Cl. C6H5Cl. Okay. What is the name of it? Chlorobenzene. Because C6H6 ru one hydrogen remove होगी chlorine form होगी, so it is chlorobenzene. So let us draw the structure of chlorobenzene to discuss the resonating effect in chlorobenzene. So look at first, let us draw benzene. Okay, here is double bond, here is double bond, then here will be double bond. Now every carbon is attached with hydrogen. So if from this carbon the hydrogen is replaced by a halogen, let chlorine, then it is C6H5Cl. This chlorine contains 3 lone pair of electrons on it. Now this is plus R effect, so it will donate electrons to conjugate system. So the electrons comes to this place, forms a double bond here, and this pi bond moves on to this carbon atom. Because 80 double bond form hela mane a double bond ta move kari jibaku padibo, otherwise this carbon ro 5 bond he jibo. Okay, so look at what happens. Look at पिला माने resonance structure draw करिबा very important. निश्चित भावे खातारे 4 थर 5 थर 7 थर practice करिवो. So this was the initial structure. Chlorine one lone pair आसिके double bond कर देला. So this chlorine ऊपर only 2 lone pair रहिला. Now 80 double bond थिला. So 80 जदि double bond रखिबी, this carbon रो 5 bond हे जिवो, एट गोटे डबल 4, एट गोटे सिंगल 5 bond. So here double bond टा रही परिबनी. So this double bond टा this carbon atom ऊपर को shift करि जिवो. Now this lone pair जेतेबेले chlorine donate कला, chlorine रो 1 electron loss हला, so chlorine will get monopositive charge. Now this bond pair जेतेबेले this carbon ऊपर को आसी गला, सेतेबेले this carbon रो 1 electron gain हबो, so this carbon will attain mono negative charge. Okay, बाकी सब जेमिति सेमिति रहिला. And this carbon ऊपर गोटे lone pair रहिछि. Okay, तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन हे परिबो, एमिति एई जो डोनेटिंग इफेक्ट ता पूरा चेन रिमूव होबो. नाउ दिस लोन पेयर एठी के आसी गोटे बॉन्ड फॉर्म करिवो, दिस बॉन्ड पेयर दिस कार्बन ऊपर आसी जिवो, एठी जेमिति हला दैट प्रोसेस अगेन रिपीट हियर. दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर टू फॉर्म एन एक्स्ट्रा बॉन्ड,
and this bond will moves to here so that this carbon can attain tetracovalency. So what is the structure I am getting? In this structure, this part of the jemiti semiti achi Cl 1 2 3 4 plus, okay, and this part एठी के आसी गला माने एठी डबल बॉन्ड हे गला माने दिस कार्बन रो नेगेटिव चार्ज रा यूज हे गला एंड दिस एटा शिफ्ट हे गला आ ऊपर को माने तो दिस कार्बन ऊपर को नेगेटिव चार्ज आसी गला एंड एठी जेमिति डबल बॉन्ड रहबा कथा रहिला, ओके, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एठी की शिफ्ट हेले एठी गोटे डबल बॉन्ड हैला एठी डबल बॉन्ड हैला को दिस पाई बॉन्ड टा दिस कार्बन ऊपर को शिफ्ट हबो सो हियर नेगेटिव हैला. नाउ लुक एट again what happens, this extra can come to here, this extra can come to here, and this can move on this carbon atom. This pi bond electrons will move on to this carbon atom. This lone pair of electrons will move to here to form here double bond. Jemti chalichi. So what is the next step resonating structures attaining? And this la এই পার্টটা যেমিতি রহিবা কথা রহিছি ডবল বন্ড ক্লোরিন 1 2 3 4 প্লাস, ওকে, নাও এটি ডবল বন্ড যেমিতি রহিবা কথা রহিছি সো দিস এটি কি মুভ কলা মানে এটি ডবল বন্ড হেলা আর নেগেটিভ চার্জ রা বি নিউট্রাল হেলা, দিস পাই বন্ড আ উপর মুভ কলা মানে দিস উপরে নেগেটিভ দিস কার্বন উপরে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ হেলা. So look at chlorobenzene C6H5Cl can exist in these type of resonating structures. Okay, again another resonating structure can also possible. How? Now this like एठी double bond करिवो ये पुनी ता ऊपर को चले जिवो. Okay, so look at this lone pair move करिके एठी double bond करिवो and this pi bond ता chlorine ऊपर को move कर जिवो. So कौन अब situation, so here double bond ता single bond है ना chlorine 4 इलेक्ट्रॉन थिला this pi bond रो दुईटा इलेक्ट्रॉन आ ऊपर को मूव कला माने 6 इलेक्ट्रॉन हे गला पॉजिटिव चार्ज रा न्यूट्रल हे गला एंड एठी जेमति डबल बॉन्ड रहबा कथा रहिछि एठी जेमति डबल बॉन्ड रहबा कथा रहिछि. नाउ दिस कार्बन रो लोन पेयर जे एठी शिफ्ट हे गला एठी डबल बॉन्ड हे गला एठी डबल बॉन्ड हे गला ये भी न्यूट्रल हे गला. So this position to this position आसपारिबो and last resonating structure of first resonating structure होछि neutral but position of bond अलगा अलगा अछि एठी सिग्मा पाई अछि but एठी ओनली सिग्मा अछि. बाकी मिडिल रे जो तीनटा resonating structure मिलला there positive negative charge are induced but no positive negative charge are induced in first and last resonating structure. Okay, so these are how minus R effect and plus R effect changes the configuration, changes the electron distribution of atoms inside a molecule. प्लस आर इफेक्ट को माने मन रखिबो माइनस आर इफेक्ट को माने मन रखिबो. माइनस आर इफेक्ट कोन करिवो कंजुगेट सिस्टम रो इलेक्ट्रॉन टाणी आनिबो विथड्रॉ करिवो. प्लस आर इफेक्ट कौन करिवो कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो. विथड्रॉ कले भी ए विथड्रॉटा चेन भितर मूव करिवो. एटा मो कंप्लीट करिनी अगेन जते बेले बेंजोइक एसिड पाठ पढिबा ए सब गुडा को रिपीटेडली करिबा सेते बेले पूरा कंप्लीट हबो. क्लोरोबेंजीन पाठ रे पुनी एटा रिपीट हबो. सो एठी मो जस्ट बिगिनिंग स्टेज तमरो ए सबरा तणो तुमको टोटल पाठ न पढे की टिके टिके तुमको देखौची सेकंड ईयर रे एगुडा को सब बहुत दरकार पड़िबो. दिस इज प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट एंड दिस इज माइनस रिजोनेटिंग इफेक्ट. एंड मने रखो को माने प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट दउचंदी को माने माइनस रिजोनेटिंग इफेक्ट दउचंदी मने रखो. ओके, दिस इज माइनस रिजोनेटिंग इफेक्ट, दिस इज प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट. माइनस रिजोनेटिंग इफेक्ट माने विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंजुगेट सिस्टम. प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट माने डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कंजुगेट सिस्टम. एंड रिमेंबर को माने माइनस आर इफेक्ट दउचंती को माने प्लस आर इफेक्ट दउचंती. ओके, Now
pause the video and write the note. Now pause the video and write the note.